Is for MSc Physics students, and we are doing the quantum mechanics part 1. And today in this video we will solve the terminal questions of chapter number 1. And the book is from Indira Gandhi National Open University. So please keep this book with you before watching this video. So let us go to the numericals. हमने जो इसकी थ्योरी है, इस चैप्टर की थ्योरी ऑलरेडी हमने डिस्कस की थी इसके प्रीवियस वीडियो में. सो प्लीज go to that video and first of all learn about all the chapter. Let's start the terminal questions of this chapter. First question is calculate the de Broglie wavelength. Calculate the de Broglie wavelength of 10 electron volt electron. So before starting the numericals, I will just want to revise the formulas of de Broglie wavelength. So first formula is lambda is equal to h by m, h by p. Second formula of de Broglie wavelength is h by mv. Third is h by 2mk, where k is kinetic energy. Fourth formula is lambda is equal to h by 2m e into v, where v is the potential. So all these formulas you should keep in mind while doing the numericals. And now come to this question. First question is calculate the de Broglie wavelength of 10 electron volt electron. So we have given the energy or energy of the electron, that is 10 electron volt, and we first of all we will convert this value of energy into joule. So by multiplying this by 1.6 into 10 is power minus 19 joule. So this is the value of energy of electron. So formula that we will use is lambda equal to h by 2m e. That is this one formula, third formula. Here k is kinetic energy, and which is given to us h by 2m e. So इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज हम पुट करेंगे. h प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.6 into 10 is power minus 34 joule second, and mass of electron, that is 9.1 into 10 is power minus 31 kilogram. So we can easily calculate the answer by substituting these values. So this is first numerical. Now go to the second part of this question, in which we have given the 1.0 mega electron volt neutron. So this is also same numerical, but we have given now the neutron, and energy is 1 mega electron volt. 1 mega means 10 is to power 6. Electron E is for 1.6 into 10 is to power minus 19 and joule. So we need to convert this value into joule. So now as we have given the neutron, so mass of neutron is 1.67 into 10 is to power minus 27 kilogram. Is it okay? So by putting these values in the same formula, we can calculate the answer. So this was the second question. Now, second question, this was the second part of first question. So now go to the second question. Second question is
an increase of 150 electron volt in the energy of the electron reduces its de Broglie wavelength to half of its earlier value. Calculate the initial de Broglie wavelength. So, when in this question it is given that energy of the electron means new energy of the electron is increased by 150 electron volt, and new de Broglie wavelength it becomes half of its initial value. Lambda, so before initial de Broglie wavelength was lambda is equal to h by 2me. This was our initial value, and by increasing the energy by 150, de Broglie wavelength becomes lambda by 2. So now our new wavelength will be equal to h by 2me dash, means new energy. New wavelength is equal to h by 2m new energy. So by substituting these values, lambda by 2 is equal to lambda dash is equal to lambda by 2 h by 2m. E dash is equal to E plus 150. E plus 150. So this is the equation number 2. Now if we divide these two equations, we will divide these equation 1 and 2. If we divide these two equations, lambda by 2 by lambda is equal to h by root 2 m e plus 150 by h by 2m e. So here lambda and lambda will cancel out. H and h, 2m and 2m e, it will be cancelled out. So our equation will become 1 by 2 is equal to square root of e by e plus 150. So by solving this equation, we can easily get the value of energy. So the question was, calculate the initial de Broglie wavelength. Initial means जो old starting में जो इसकी value थी lambda की, वो हमने calculate करनी है. This value lambda equal to h by 2me, ये वाली value हमने calculate करनी है. और हमने E तो कैलकुलेट कर ही लिया इस क्वेश्चन में. सो वी विल पुट दिस वैल्यू, जो हम यहाँ पे एनर्जी कैलकुलेट करेंगे यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व करके, इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे और वहां से हम लैम्डा जो वेवलेंथ है वो कैलकुलेट कर सकते हैं. लैम्डा इज इक्वल टू h बाई 2m. h की वैल्यू, मास की वैल्यू और जो एनर्जी हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम यहाँ से वेवलेंथ इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. Okay, so this was the second question. Now next third question is, what is the potential through which a proton must be accelerated so that its de Broglie wavelength is 2 angstrom. पोटेंशियल हमने कैलकुलेट करना है और हमारे पास एक प्रोटॉन है, so that its de Broglie wavelength is 2 angstrom. इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, de Broglie wavelength दी हुई है 2 angstrom है. एंगस्ट्रॉम मीन्स 10 is to power minus 10 मीटर. ये हमें वेवलेंथ दी हुई है और हमने पोटेंशियल कैलकुलेट करना है. ओके,
और प्रोटॉन है हमारे पास, क्या है, प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन का मास आएगा यहाँ पे, मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ओके, सो क्योंकि हमने पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो लैम्डा का हम वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें हमें पोटेंशियल दिया होता है। तो लैम्डा इज इक्वल टू h/2m/eV। इस फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे, इसको पहले हम स्क्वायर कर लेंगे दोनों साइड। तो ये आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू h² / 2m/eV। और यहाँ से हमने क्योंकि पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, we will take potential to this side. So potential is equal to h²/2m/e lambda square. So this becomes the formula, and in this formula we will just substitute all these values. Planck's constant की value है 6.6 into 10⁻⁻34 joule second. 2 mass of proton, proton का mass हमें ये वाला दिया हुआ है, और E is the charge on electron, that is 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। ये हमारा चार्ज है ऑन इलेक्ट्रॉन। और लैम्डा की वैल्यू हमें दी हुई है 2.2 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। इसमें हम सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके पोटेंशियल निकाल लेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज determine the fourth question, determine the de Broglie wavelength of electron in the first Bohr orbit। फर्स्ट बोहर ऑर्बिट में हमने निकालना है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो हमें इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है फर्स्ट बोहर ऑर्बिट में वो कितनी होती है, बोहर ऑर्बिट में एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन n स्क्वेयर। ये फॉर्मूला होता है nth ऑर्बिट में एनर्जी निकालने का। ठीक है, nth किसी भी ऑर्बिट में हो सकता है इलेक्ट्रॉन, तो उसकी एनर्जी होती है ये वाली -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन n स्क्वेयर। n इज द वैल्यू ऑफ nth ऑर्बिट। If but in this question we need to calculate the wavelength in the first orbit, so n is equal to 1, so E1 is equal to -13.6 electron volt upon 1 square, so value is -13.6 electron volt, and we will convert this value into joule by multiplying -1.6 into 10⁻⁻19 joule. So this is the energy, and we will need to calculate de Broglie wavelength. So we will use this formula h/2m/e. When we have given energy, we will use this formula h/2m/e. M is mass of electron 9.1 into 10⁻⁻31 kilogram. This is the mass of electron, Planck's constant, and energy. By substituting all these values, we can calculate the de Broglie wavelength. So this was the fourth question. So next question is, fifth question is, an electron has a de Broglie wavelength equal to that of photon of red light having wavelength 620 नैनोमीटर। इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ हमें दी हुई है कि जो उसकी वेवलेंथ है इलेक्ट्रॉन की, वो फोटोन की रेड लाइट का जो फोटोन है उसकी वेवलेंथ की इक्वल है, जिसकी वैल्यू 620 नैनोमीटर दी हुई है। तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, -10⁻, नैनो मीन्स 10⁻⁻9 मीटर।
So this is the de Broglie wavelength. Calculate the energy of electron. एनर्जी हमने कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, H/2me। इज इट ओके? सो इसमें से हमने क्या करना है, एनर्जी निकालनी है, ठीक है। तो इसको हम स्क्वेयर कर लेंगे और इसमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जी, तो इसमें इस क्वेश्चन में हम इसको स्क्वेयर कर देंगे, इस फॉर्मूले को 2me, H/2me, इसको हम दोनों साइड स्क्वेयर करेंगे, H²/2me। और एनर्जी हमने कैलकुलेट करनी है, तो एनर्जी को इस साइड में ले जाएंगे, H²/2m लैम्डा स्क्वेयर। ओके, तो इसमें H की वैल्यू, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और लैम्डा, लैम्डा हमें वैल्यू दी हुई है 620 इंटू 10⁻⁻10 नैनोमीटर। ओके, तो यहाँ से हम एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। और सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट वुड बी इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ इफ एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन वर इक्वल टू एनर्जी ऑफ दिस फोटोन। अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फोटोन की एनर्जी के इक्वल होता तो उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होती, ये हमने कैलकुलेट करना है। सेकेंड पार्ट है डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितनी होगी इफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ दिस फोटोन। और फोटोन की एनर्जी होती है H/न्यू। और इस क्वेश्चन में हमें फोटोन की क्योंकि वेवलेंथ दी हुई है, तो इसको हम Hc/λ, ये हमारा फॉर्मूला होता है, न्यू इक्वल टू C/λ। न्यू को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया C/λ। और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी दी हुई है, इक्वल टू दैट ऑफ फोटोन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है Hc/λ। लैम्डा की वैल्यू हमें दी हुई है 620 नैनोमीटर। इसको हम कैलकुलेट कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में। ये दी हुई है, H दिया हुआ है और C दिया हुआ है। अगर एनर्जी इसके इक्वल होती, यहाँ पे हम सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके एनर्जी निकाल लेंगे। एनर्जी आ गई, तो उस एनर्जी की वैल्यू हम यूज कर लेंगे लैम्डा डी ब्रॉगली वेवलेंथ को कैलकुलेट करने के लिए। फिर हम ये फॉर्मूला लगाएंगे H/2m। ओके, सो यहाँ से हमने स्टार्ट करना है। हमें क्या दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फोटोन की एनर्जी के इक्वल है। और फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला होता है H/न्यू। और न्यू क्या होता है, C/λ। लैम्डा इज गिवन 620 nanometer. By substituting these values, we can calculate energy. And we will use this energy to calculate the de Broglie wavelength, lambda equal to H/2m E. M is mass of electron, H is Planck's constant, and energy that we have already calculated. So this was the question number 5. And now come to the question number 6. Calculate the average de Broglie wavelength of a gas average de Broglie wavelength of a gas of fullerene molecules
heated to a temperature 900 Kelvin. टेम्परेचर हमें दिया हुआ है 900 Kelvin. Mass of fullerene molecule is approximately, mass is also given 720 atomic mass unit, and 1 atomic mass unit is given 1.66 into 10 is to power minus 27 किलोग्राम. So इसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे. So this is the value of mass of fullerene molecule, and temperature is also given. We need to calculate the de Broglie wavelength. So in this question, we will calculate the energy. Formula of energy is, as we know the law of equipartition of energy, that in each degree of freedom, the energy associated with each degree of freedom is 1/2 kT, and as there are 3 degrees of freedom for this molecule, so this is the energy formula. Energy formula is 3/2 kT. Law of equipartition of energy says that 1/2 kT is the energy associated with each degree of freedom. If there are 3 degrees of freedom, then the energy becomes 3/2 kT. Small k b. Kb is the Boltzmann constant, and its value is 1.38 into 10 is to power minus 23 joule per Kelvin, and 3/2, and T temperature is 900 Kelvin. So here we can calculate the energy, and we will use this energy to calculate de Broglie wavelength h by 2m(E). So by substituting the value of energy, Planck's constant, and mass that is already given, so we can easily calculate the de Broglie wavelength. So next question is question number 7. In an electron microscope, the electrons are accelerated through a potential through a voltage of 200 kilo electron volt. I think this value is wrong. This value should be given 200 kilovolt, because the voltage is always in volts, so I think it may be kilovolt. So potential or voltage is kilo means 10 is to power 3, 200 into 10 is to power 3 volt, and we have to calculate the de Broglie wavelength. And de Broglie wavelength formula that we will use here is lambda equal to h by 2m E into V. As we have given the electron, so we will use the mass of electron, charge on the electron, Planck's constant, and voltage value is already given to us. So we can, by substituting all these values, we can get an answer. Next question is question number 8. Thermal neutron with a speed v corresponding to average thermal energy 3/2 kBT at temperature 300 Kelvin is incident on a crystal. Will the diffraction pattern be observed? क्या इसमें diffraction pattern observe होगा, ये हमने देखना है इस क्वेश्चन में. तो हमें सबसे पहले क्या निकालेंगे, एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे. 3/2 kT and temperature is already given. Energy is equal to 3/2 kBT. kB is the Boltzmann constant, 1.38 into 10 is to power minus 23, and temperature is 300 Kelvin. So this is the value of energy, and we will calculate the de Broglie wavelength h by 2m E by using this formula.
and we will see that this value of this wavelength comes out to be, in question number 8, this value comes out to be 1.45 angstrom. And to observe the diffraction pattern, neutron diffraction, the value of de Broglie wavelength should be comparable to the size of the lattice. Lattice spacing. Lattice spacing means A, B, and C lattice constants in the crystal. As the all the constant lattice constants are in the order of 10 is to power minus 10 meter, that is 1 angstrom. So our de Broglie wavelength is also in angstroms. So this is comparable to our lattice spacing. That's why we can say that the neutron diffraction will take place. So this was the question number 8. Next is the question number 9. In question number 9, a photon and an electron each have an energy 6 into 10 is to power 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. हमें इसमें क्या दिया हुआ है, एनर्जी दी हुई है. फोटोन की एनर्जी भी सेम ही है और इलेक्ट्रॉन की भी इतनी एनर्जी दी हुई है. एंड व्हाट आर देयर वेवलेंथ्स, हमने वेवलेंथ्स कैलकुलेट करना है. विच ऑफ दीज वुड यू यूज टू प्रोब द एटॉमिक स्ट्रक्चर. एटॉमिक स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए हम इन दोनों में से किसको यूज कर सकते हैं, ये हमने फाइंड करना है कि फोटोन और इलेक्ट्रॉन में से किसको हम यूज कर सकते हैं. तो इसमें हम सबसे पहले दोनों की डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे. फोटोन के लिए हमें एनर्जी दी हुई है और फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच न्यू और एच इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ एच सी बाई लैम्डा. सो इस फॉर्मूले से हम फोटोन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकाल लेंगे एच सी बाई ई. एनर्जी हमें गिवन है 6 इंटू 10 इज टू पावर 3. एनर्जी की वैल्यू पुट करेंगे. सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10 इज टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड. H is Planck's constant 6.6 into 10 is to power minus 34 joule second. So by substituting all these values, we can calculate de Broglie wavelength. And for electron, then for electron के लिए हम निकालेंगे वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे H/2me. इलेक्ट्रॉन के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10 is to power minus 31 किलोग्राम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट. एंड एनर्जी हमें गिवन है 6 into 10 is to power 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसको हम एनर्जी को हम सबसे पहले जाउल में कन्वर्ट कर लेंगे. एनर्जी की जो वैल्यू हमें दी है 6 into 10 is to power 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 into 10 is to power minus 19 से मल्टीप्लाई करके ये हमारी एनर्जी आ जाएगी जाउल. ठीक है, तो इस वैल्यू को पुट करके हम निकाल लेंगे इसकी डी ब्रॉगली वैल्यू. यहाँ पे भी जो हमने एनर्जी की वैल्यू पुट करनी है ना, वो जाउल में ही पुट करनी है. ओके, सो फ्रॉम दीज टू formulas we will find the de Broglie wavelengths for both photon and the electron. And we can see that from the calculated values we can see that the wavelength of photon comes out to be 2.1 angstrom and wavelength of electron comes out to be 0.116 angstrom. And from here we can say that this value of de Broglie wavelength of electron is more comparable to the size of the atom. एटम के साइज के जो कंपेरेबल है. ठीक है, तो इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन्स को यूज कर सकते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर्स को स्टडी करने के लिए. ओके, सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9. उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन. लास्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ रबीडियम. रबीडियम की हमने डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है.
और हमें गिवन क्या है 120 माइक्रो कूलम माइक्रो केल्विन 120 माइक्रो केल्विन तक हमने रबीडियम को कूल किया है। क्लियर। तो हमें टेम्परेचर गिवन है और रबीडियम का मास भी गिवन है। तो हमने क्या कैलकुलेट करना है डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है लैम्डा इज इक्वल टू। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्योंकि टेम्परेचर गिवन है 120 माइक्रो केल्विन, तो इसको पहले हम ना केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे 120 इंटू माइक्रो मीन्स 10⁻⁻⁶ और केल्विन। ये हमारा टेम्परेचर आ गया और यहाँ से हम निकाल लेंगे पहले एनर्जी। एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kB इंटू टी। kB इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड टी इज द टेम्परेचर। ये सारी वैल्यूज पुट करके हम निकाल लेंगे एनर्जी। उसके बाद हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे h/2m। ओके, यहाँ पे हम मास है जो रबीडियम का हमें गिवन है इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू और ये वाली जो हम एनर्जी निकालेंगे उसकी वैल्यू। ये सारी वैल्यूज पुट करके हमारे पास वेवलेंथ आ जाएगी। ओके, सो दिस ये हमारे थे टर्मिनल क्वेश्चंस of chapter number 1. If you like this video, please share and subscribe this channel, and please comment in the comment section that if you want more videos on next chapters of quantum mechanics. Thank you.